हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम बैक टू आवर चैनल अभीसियो। तो दोस्तों, आज हम आए हैं वापस से दुबई। अभी हमें एक इवेंट में जाना है। इस इवेंट का नाम हम आपको आगे बताते हैं। और अभी हम यूनियन मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो चलिए अभी चलते हैं मेट्रो और फिर दिखाते हैं आपको आज का सफ़र। तो दोस्तों, अभी हम देख सकते हैं आ चुके हैं मेट्रो के अंदर। सो मेट्रो स्टेशन से हम नीचे चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज जो हम जा रहे हैं मिडिल ईस्ट का एक बहुत बड़ा इवेंट है। तो अभी एंट्री कर लेते हैं मेट्रो के अंदर। तो देखा आपने, अभी हमने कार्ड से एंट्री की है। और अगर आप लोग दुबई में मेट्रो से ट्रैवल करना चाहते हैं तो बहुत चीप उसमें कर सकते हैं, बहुत। तो अभी हमने मेट्रो का सफ़र तय कर लिया है। हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। जहां हमें इवेंट पे जाना है। यहाँ से अभी हम देख रहे हैं बाहर। बाहर तो गर्मी है, अभी अंदर आके हम थोड़े से आप लोगों को बता देते हैं। जो मिडिल ईस्ट का हमारा इवेंट है, उसमें हम जा रहे हैं। और ये मेरा दुबई का सबसे पहला इवेंट जिसमें मैं अटेंड कर रहा हूँ। वहाँ पे नए लोगों से मिलने को मिलेगा और डिजिटली उनसे बात करने का मिलेगा। वो सारा पर्पस है। तो अभी हम देख सकते हैं पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और जस्ट अभी हम जा रहे हैं और अभी दिखाते हैं आपको अंदर का। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। तो फिर हम मिलते हैं आपसे आगे। और बहुत सारा मज़ा आने वाला है अंदर, आप देखिएगा। बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजी की चीज़ें। और ये रहा हमारा जो हमें पास टाइप मिला है जो इवेंट का, जो हमने रजिस्टर ऑलरेडी किया था। अभी हम थोड़ा सा टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। और ये देख सकते हैं बाहर का व्यू। जो ये एक होटल टाइप ही है। इसके अंदर पूरा एक बड़ा सा हॉल है और वहीं पर इवेंट हो रहा है। जस्ट अभी हम 10:30 पहुंच चुके थे। और जो इवेंट है विजिटर्स हैं हम विजिटर्स के लिए 11 o'clock एंट्री है। उसी का हम वेट कर रहे हैं बस। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है इवेंट का पूरा लेखा जोखा जो भी है आपको दिख रहा है सामने। और अभी जस्ट अंदर जाएंगे तो फिर आपको दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। तो बस हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। और तो चलिए दोस्तों, हम अंदर आ चुके हैं। देख सकते हैं कितना ही अच्छा नज़ारा है और अलग अलग चीज़ें हैं देखने को। हम फर्स्ट टाइम दुबई का अटेंड कर रहे हैं कोई भी इवेंट ऐसा, जो टेक्नोलॉजी से भरा हो, जो मोटिवेशंस, जो यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह आएंगे जो मार्केटिंग के बारे में बताएंगे। तो इन सब चीज़ों को ये देख सकते हैं डिजिटल, पूरा डिजिटल ये कोई मीडिया है। और अपनी जो भी यहाँ पर हर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी हो गई, बड़ी बड़ी कंपनी हो गई, वो सब जैसे इंडिया में क्या होता है एक्सपो हो गया या फिर एक ट्रेड फेयर लगता है, उसी टाइप से ये भी इवेंट मेरे को लग रहा है। यहाँ पर सारी चीज़ें एक रूफ़ के अंदर सारी चीज़ें हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग कंपनीज़ के छोटे छोटे स्टॉल्स, या उन्होंने एक ब्रांड, अपना ब्रांड प्रमोट करने के लिए एक अलग से पवेलियन टाइप बना रखा है। ये जो देख रहे हैं लाइटिंग वाला जो चेयर्स वगैरह लगे, ये है एक मीडिया है। इन्होंने ये पवेलियन टाइप बनाया हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अलग अलग पवेलियंस टाइप में बने हुए हैं। तो दोस्तों एंजॉय करिए हमारे साथ और ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और जो इसका सेकंड पार्ट है दोस्तों, वो भी हम इसके लिए लेकर आएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो। क्योंकि ये जो वीडियो है और ये देखिए दोस्तों, ये गेम कैसे खेल रहे हैं। यहाँ पर जो भी आपको देखने को मिल रहा है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और फिर उसको अपना आगे आने वाले लाइफ में, या फिर आगे आने वाले अपने टाइम में यूज़ कर सकते हैं। उनसे कनेक्शन बना सकते हैं या फिर उनसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, उनका कॉन्टेक्स्ट डिटेल ले सकते हैं। तो ये इवेंट उसी लिए किया गया है कि नई नई चीज़ें लोगों को यहाँ पे इवेंट अटेंड करने आएंगे तो उनको हमारे उनके ब्रांड के बारे में पता चलेगा, या उन्होंने कोई स्टार्टअप किया है या फिर कोई रेप्यूटेड कंपनी है, या फिर कोविड के दौरान क्या सिचुएशन थी, उसके बाद कैसे बिजनेस स्टार्ट किया,
ऑनलाइन बिजनेस कैसे हम कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उस इस इवेंट में आपको देखने को मिलेगा। सो हम आपको अभी दिखा रहे हैं थोड़ा सा ओवरव्यू इधर उधर। सो हमारे 2 पार्ट्स हैं दोस्तों मतलब इस इवेंट के, जो हम अपने चैनल पे डालेंगे, और जो हमने कुछ स्टोरीज़ वगैरह भी उस दिन डाली थी। सो ये था 15 और 16 जून को था, तो हमने एक दिन अटेंड किया था। सो बहुत ही मज़ा आ रहा है और देख सकते हैं आप। तो चलिए थोड़ा सा म्यूज़िक के साथ एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों देखिए, एक रोबोट मिला हमें। तो ये देखिए कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले ही बताया वीडियो में, ये जो इवेंट है टेक और टेक्नोलॉजीज़ एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें मतलब आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़। अब ये देखिए एक रोबोट बनाया है इन्होंने, ये मतलब चलता भी है और चलता, ये तो अभी रिमोट से चल रहा है। तो दोस्तों देखा आपने ये रोबोट के बारे में, थोड़ा सा बीच में हमारा आवाज़ कट गई थी। सो ये देखिए बहुत ही अच्छा, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों को मिलाकर एक इवेंट है। सो देखिए रोबोट कैसे मतलब काम कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं थोड़ा सा। movement is based on the AI or the gesture? What? The movement is based on the gesture? Yes, yes. You're giving the gesture? In the start of Q4, we're going to be launching new DXP, which I don't know if it's up there, but it's NU DXP, pretty much a lifestyle app, which is aimed at existing people who are here already, new arrivals in terms of tourists and the transit market in Dubai. But pretty much we want to bring everything together under one app, from lifestyle, well-being, F&B, nightlife, whether you need to hire a car or go get a facial. But it will be very much led by content, and it'll intersect with the event side and with the ticketing side and the marketing side as well. So just providing a real connection between people and business, not just another app that goes through the motions of discounts who want to add value, but also we'll have a firmly established community side where we'll be at the forefront of events within that infrastructure as well. So I think it'll bring something new to Dubai, hopefully. But look, it's really interesting from my side because it brings in that collaboration that तो दोस्तों ये doesn't matter सारे what इवेंट्स industry. वगैरह हो रहे हैं। अभी आपने कुछ सुना होगा, थोड़ा सा लास्ट का हमने एक क्लिप सुनाया होगा। सो तो अभी फिर से एक ये एंटरटेनमेंट पर्पस से Please make some noise for Hey! yes for our duet. Let's go. Let's do. What kind of music you like? Like hip hop or house music?
EDM, like this one. Okay, or more like it's amazing. Let's go. Let's do it. Yeah, you feel this vibe, yeah? Oh yeah. Yeah, almost ready. Yes, you feel it. Everybody feel this vibe. Everybody feel this one. Everybody feel this one. Everybody feel this one. Yeah, and now it's your turn. Let's go. Let's get it. Just say something in this microphone. Please make some noise. Oh yeah? Yeah. Oh yeah? Oh yeah. Can you feel? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Chip. Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Yeah, yeah. Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Oh yeah? Yeah, 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 yeah. Everybody feel this one. 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 दोस्तों देखा भी आपने, बहुत ही मज़ा आया उनका एंटरटेनमेंट जो गाना उन्होंने रैप करके बनाया, अलग ही लेवल। तो ऐसे ऐसे एंटरटेनमेंट पर्पस से भी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, देख सकते हैं ये अलग ही टेक्नोलॉजी निकाली है इन्होंने, देख सकते हैं। सो ये जो पूरा मतलब एक लग रहा है कि मतलब माइंड, मतलब एक वॉल है, उससे आप ऐसे देख रहे हैं किस तरीके से मतलब चीज़ें निकल रही हैं, क्या मतलब एक पूरा टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ किया, एडवांस मतलब इन फ्यूचर है दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता चलता है ऐसे ऐसे इवेंट्स में। तो हम तो ज़रूर बोलेंगे कि अगर ऐसा कुछ भी इवेंट होता है तो आप लोग जाइए, वहाँ पर लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलना, नए नए जगह पर जाना, ये भी एक एक्सपीरियंस ही होता है कि मतलब लोगों से मिलना, नए नए जगह। अब हम यहाँ पर गए तो हमें यहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ों के बारे में पता चला, फ्यूचर में जॉब प्रोस्पेक्टिव या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे, मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चला। तो चलिए दोस्तों, आगे आप लोग देखते रहेंगे इस वीडियो में। और जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है कि हम इस इवेंट के 2 पार्ट बना रहे हैं। सो हम अलग अलग जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं, घूम घूम के हम आपको एक अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी ये देख सकते हैं ऊपर कि ऊपर नीचे ये हो रहा है। सो 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। जो हम ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, इसके बाद आने वाला नेक्स्ट सेकंड पार्ट होगा। सो यहाँ पर स्टार्टिंग में भी हमने आपको दिखाया था गेम्स वगैरह, आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने आगे आने वाली लाइफ में या फिर एक अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ, इस मतलब एक मॉडल के साथ। यहाँ पर ये अपना प्रोटोटाइप मतलब एक लेकर आते हैं सारे कि हमारा ये ऐसा बिजनेस है। और ये देख सकते हैं ये है एक न्यूज़ मतलब न्यूज़ रिपोर्टिंग वगैरह कैसे होती है, एडवांस लेवल की, मतलब आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मतलब इंटरव्यू दे रहे हैं और आपका मतलब लाइव आ रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी कंपनी है। और थोड़ा सा इनका डांस एंजॉय करिए दोस्तों। ये एक मतलब जिससे जहाँ पे अभी शो हो रहा था ना म्यूज़िक वाला, अभी आप आगे देखेंगे म्यूज़िक, तो इनका एंजॉय करिए दोस्तों। Hands
तो देखा दोस्तों इनका म्यूज़िक अलग ही, मतलब ये इनका शायद वो है, मतलब डांस स्टेप टाइप है जो वो दिखाते हैं पूरा डांस। तो फिर यहाँ पर इनको papal सुनते visit, which had more than 150,000 people at one place, and then the Special Olympics. Having so much multiple projects happening back to back, it might be a unique opportunity, but in the same time, that's when the companies actually shows its strength. Planning, organizing, having the right people behind all of these deliveries, and they are part of the team, and they are the people who basically will hold you basically delivering all of these things. So yes, the payback is very rewarding. So use the freelancers. Use the freelancers. But on that point as well, look at Saudi. Saudi just boomed before COVID hit. Saudi boomed, and all of a sudden, just myself as a client, I struggled to find agencies to pitch for my work, because they couldn't commit to being available to deliver the work at the time I needed. So the region, as fantastic as it is to have all of this work coming to us and so many opportunities, how do we deal with that drain? That is a drain. So if they're all out in Saudi, who's delivering the work here? This is a challenge that's been happening over the past few Right. months. It's a good challenge to have. With Expo being also live, the Saudi season and the Riyadh season being alive, there was also a gap in the market where you try to find the right talent and the resources that's being freelancer wise, and also production and equipment wise. But it basically showed the companies that are also willing to invest in UAE but waiting for the right moment, that there is an opportunity and there is a potential. With all of these events happening abroad, especially after Expo, other companies are now very confident that there is so much opportunities to invest in the region, not only UAE. Like there are so many invitations that we received after Expo with companies, new production companies, that they want to showcase their equipment, because now they are very keen that the region needs these kind of capabilities, and they are very well happy to offer it. Not only in UAE but also in the region. But they know that being in UAE, being that strategic position, they can actually feed the whole of GCC in addition to what UAE needs. So as much as it's a challenge that you need to look into these kind of resources, also on the back end, without us knowing sometimes, it attracts other people because they see the need and they have more confidence and they feel more comfortable now by investing in their time or in their resources to basically be stationed in this region, because there are so much opportunities happening. And at the same time, because we are in this region, we are somehow binded by a certain period where event goes through the pipeline, either in Q4 at the end of the year or a Q1 at the beginning of the year, which mainly make sure that other regions around the world, like for example European, US and Australia, since it's basically the different weather there, that's where people actually come here. So it's some kind of put itself. It works. It works in the right way. They come in this region on these kind of months, and then they travel back. So it provides you with options. It just you need to have a bit more of investment and make sure that you choose the right way to move forward. And it's great to hear that there's so many suppliers that are looking to come out into the region. Do you remember there was a time where there wasn't enough kit? You'd have to fly things in to do events, and it became really cost prohibitive. So to hear that now, and you had to beg people, suppliers, come work here. And now to have all these people they're asking us to make them a part of. Yeah, and that's the result of attracting these kind of global events. Having Expo in Dubai, having World Cup in Qatar, and Riyadh season in Saudi Arabia. It shows the world. It sends a very direct message that there is a need for these kind of investment, the possibilities, the credible suppliers that can come and deliver and showcase what they actually are capable of. It's it is available. It's there. So how did COVID impact all of this? From your perspective? I think COVID played a very major role in changing the whole of the event industry. I mean, and everyone went through it, introducing new terms like, for example, social distancing, PCRs, and virtual reality. It's like
all of these things were almost there, but no one actually picked on it until COVID came and basically somehow directed us toward making sure that these are the things that need to be implemented. Flash Entertainment throughout the pandemic, we looked into investing more in our virtual reality options, digitalizing the events, and making sure that there are options for the consumer that had a lot of demands, knowing that the events industry is somehow not as it used to be before, and that's what made us involved into basically invest in local talents like Fafa and Fleek, and basically introduce to them a platform where they can actually be very well known, not only through Abu Dhabi or Dubai or UAE, but also throughout the GCC region. We also have a partnership with Abu Dhabi Gaming that basically where we support in creating 4 esports events, having people competing in PUBG, competing in FIFA 2022, Fortnite, and so on. So it's created the new opportunities and new spectrum that that it's there and you can actually invest in it, and the consumer is looking forward to that. And the beauty about this spectrum is not binded by the location of where you operate. It's actually interest. So you can do one thing that basically expands not only to the country itself but to the whole region, which is one of the core businesses of what we're looking for at the moment in Flash. We're looking into expanding into the region. We want to build on the experience that we have in events we did in Dubai can happen. And we started looking into the regions itself, like Saudi Arabia or like Qatar or Lebanon, and see what kind of events that we can invest in, because we need to be very culture sensitive and aware of what can and can't be done, and make sure that we provide the consumer with the right type of entertainment. And this is how we started with it. And we had a couple of events, like for example we did WWE in Saudi Arabia and Riyadh in the Green Hall, and it was very interesting to see how it can turn into like a proper delivery of an event, and making sure that people have a window of entertainment at that time. And it makes also a bit of a feel of what to operate in a different country. You get used to the region that you work with and the people that you work with sometimes, and basically create some sort of a routine where you somehow think in a certain way how to deliver the event, but moving out of that box, it तो एंड में opens your दोस्तों eyes to इनका different मतलब opportunities ये first, but also दुबई के mentality and मतलब resources शेख where टाइप लग you रहे make हैं। sure ये that भी you इनका somehow गेम talent कंपनी है, whatever तो it is, इन्होंने भी बहुत अच्छी you नॉलेज somehow दी है tailor हमें। made तो चलिए whatever you दोस्तों have सेकंड पार्ट में to what मिलते the हैं consumer आपसे, wants जब in तक this के लिए अपना region. ख्याल रखिए, बाय बाय।